जय माता दी आदेश नमस्कार दोस्तों गुड इवनिंग वेलकम टू दी इवनिंग शो ऑफ मार्केट एनालिसिस मेरा नाम है विशाल एंड दिस इज 522nd एपिसोड ऑफ not live but recorded analysis because as I had mentioned on Sunday that I will be on the move. I will be traveling, so a couple of days there won't be live session, but I will try to put some recordings or something like that. So yesterday I tried to conduct a live session, but there was some network issue or something like that, some technical glitch, so I could not continue, so I had to abandon that live session. So I'm sorry for that, and today I am going to present this analysis to you because a lot of things are happening in the market. Yesterday was a great day for us, and today was also a fantastic day because these markets are acting exactly as per our short term, mid term, and long term analysis that we have been putting forth right in front of you. So, welcome, good evening, namaskar, and let us start today's analysis. And tomorrow also, there will be a recording. I will try to upload the recording pretty early. And the live session, I think they will begin from, or they will resume from 2nd of March, which is I think Wednesday, next Wednesday. So just a matter of a couple of sessions, and from Tuesday we will start the live session. Okay, so what is happening right now? So we can see the global markets, they are a little cautious right now because of the Russia and Ukraine crisis. And US market is trying to take support at 4200. 4200 is a very, very sticky level for this market. And recently I've said that, any move that comes here around 4200 should be bought. It will be slightly panicky sort of environment, but this is the deal, this is the best place you can buy with some hedging or something like that. 4200 is a place to buy for one good bounce up till 4600, or it can stretch even till 4700. Now these markets have, as I've been mentioning, they are making some lot of rounding tops or rounding structures. Most of them are making a head and shoulder structures, and as I've said, that whenever most of the charts they make a similar pattern, what happens is there is a failed breakdown or a failed breakout, and there's an opposite move. So this is what is likely to happen in these markets during this migration of the Russia. So right now we have the weekly and the monthly expiry tomorrow for Nifty, and let us see how Nifty will behave. एक बार global markets पे नजर डालते हैं. So we are trading slightly weak. Markets are slightly nervous, but nothing to be scared about. 4200 on the S&P 500 is a good support. Let us talk about the US dollar. So US dollar today is again doing nothing. So what is interesting to me is that since the entire saga of Russia and Ukraine began, this thing has not moved anywhere else. So this is something which is little, I would say this is not giving any sort of clue as to where the big money is anticipating what will happen. I think the big money is simply becoming day trader because nothing much is happening. There's no signaling effect from the US dollar. So in the Forex market, we are having some great time. When I say Forex market, I don't mean the spot Forex market. I mean the NSE Forex futures market. So we were bullish day before yesterday, and we had went long on almost all the pairs yesterday. We got some nice up move, then we went all short on all pairs, and today morning we got all tip again. And intraday also there were a couple of shorting opportunities. So in the NSE futures Forex market, we are doing excellent, and it's a very, very superb boon for the retail trading community in India. So right now we are short on all the Forex pairs. So we are short on USD INR, JPY, Euro, GB, everything. All the four pairs that are traded, we are all short, and I'm expecting again some more downside. Okay, overall, I don't see these pairs moving higher, as in there's no bullish breakaway thing going to happen. Neither there is not going to be any breakdown sort of thing. So mostly they are going to remain in their respective levels, the levels which I had shared in my last analysis. Those levels are the still those levels will work.
And our approach for tomorrow and for day after tomorrow, tomorrow at 12 o'clock, these contracts will expire. So we will have to roll over to the March series. Now, what will be bias, or what will be the game plan for tomorrow's session for Forex market? So all these pairs, USD, INR, then you have Euro, INR, then you have GBP, INR, and you have JPY, right? So all these are going to be sold off. So I will keep only shorting as a target. Okay, USD, INR, I would not like to short much. Okay, I would like to pass it on. Okay, इसको सिर्फ pass on करेंगे, because I think it is not offering any great opportunity to short, neither there is no long opportunity. So I would just skip it for the some time. If it starts to move up, which in current contracts value, if it moves somewhere 30-40 paise up near the next round number, then only I will try to short this USD INR. Or else everything Euro, British Pound, and all these, simply we have to short. Today also we have shorted, will carry, and tomorrow if there is some bounce again, you have to short. So जो भी recent मैंने levels दिए हैं वही levels hold करेंगे, कुछ खास इसमें update नहीं है. हाँ, एक चीज है कि now we are heading towards a critical time zone for equity markets and for geopolitics and for Forex market. And as you can see, the US dollar has not done anything in last 20 days. Okay, so US dollar is waiting for something, or US dollar is not sensing something, or whatever the issue is, the US dollar has to react and it is not reacting. So this is something which will trigger a sharp move in the Forex market on either side. Okay, so in last few sessions we are enjoying the the range bound activity, the up down movement in Forex market, but it is going to resolve like this. So what will happen is, the recent conditioning in the Forex market should not make you a big loss when it is trending. So इस बात का ध्यान दीजिए. ओके, चलिए सीधे आते हैं कमोडिटी मार्केट्स पे. तो इस समय गोल्ड जो है बुलिश है. गोल्ड पे मैंने मना भी किया है, अभी कल भी और परसों रात को ग्रुप पे भी हमने अपडेट किया था, गोल्ड में शॉर्ट वगैरह जो है ना करें. And this is precisely the reason, because gold is not giving any enough opportunity to short. Now here something interesting is happening, which is 1 2 3. So I like this structure going forward. अगर मुझे गोल्ड जो है some sort of topping effect यहाँ पे अगर दिखाता है, probably in couple of days, only in that scenario जो है I would like to short gold, and that too in mini contracts. Don't trade without stop loss. Now one more thing is, if gold is closing above 50,000, or if it is staying near these levels, okay, then I don't think it is prudent to short gold and go on a weekend, because I suspect there will be some huge event on the weekend, especially from the Europe. So I think gold is being bought as a safe haven in the current geopolitical crisis. Also, the Jan to April cycle is definitely bullish for gold almost most of the time. So that is also helping. So we have a bullish seasonality, we have a crisis. So both these factors are definitely aiding bullish gold. And technically also we are in a bull run. ठीक है, सो गोल्ड पे शॉर्टिंग वगैरह जो है नहीं करना है, सोच समझ के यहाँ पे काम करेंगे. सिल्वर में कोई व्यू नहीं है. क्रूड की बात करें तो क्रूड इज अगेन रिस्पेक्टिंग दो सेम लेवल, सो वी हैव टू बाय ऑन डिप, same 6650, 6700. These are the buying zones. I think yesterday there was one cracking down move that came near 66 60 sort of level. These are the buying levels. I've already said in the weekly analysis and even on Monday, and immediately it spiked almost 300 400 points. So this was a very very cracking move. And जिसने भी वीकली एनालिसिस में यहाँ पे बाय वगैरह किया होगा, आपको स्ट्रेट अवे 200 300 350 पॉइंट का इसमें प्रॉफिट हुआ होगा. सो क्रूड पे स्टिल द सेम थिंग कंटिन्यूज, एंड the trajectory that I am looking forward is something like this. Okay, so 7400 window is open, 6600 is your floor. 6600 जब तक ब्रेक नहीं करता है, अगला दायरा जो है वो है 7400 का. and we have been nailing the bull trend in the crude oil since so many months now. बहुत बहुत एक अरसा हो चुका है. I think since so many months we have been tracking this bullish phase of the crude oil. एक थोड़ा सा बड़ा perspective आपको दिखा देता हूँ मैं crude oil में, that we are approaching some significant resistance coming here,
and we are also approaching some significant resistance coming here. The common point comes to 7,400 level on the MCX, and this 6,600 is the floor. So even if crude is bullish, it will not move up that easily, because I suspect we are in the fag end of this crude oil rally. There is even one more trend line coming from here, which has again proved massive resistance, and every time it has generated some super duper drops in the crude oil market. Current last three scenarios, you can see there were bigger drops. Every time the drop used to be bigger. So what I feel is that crude will try to distribute in this zone, probably make some head and shoulder, or maybe some three drive or rising wedge, something like that. And from this, I think the crude will face a hard time crossing this 72 and 7400. And after that, once it has given a resolution on the downside, then I think it will become prudent to start a shorting move like this 5600. So as you can see, these are symmetrical moves. They have symmetrical price and time distance. So I think one symmetry got completed here. So इस चीज का ध्यान देना है कि क्रूड में अगर ये पुराना हाई जो है, अगर ये क्रॉस होता है, ये पुराना हाई जो क्रॉस होता है, तो एज पर दिस प्राइस एंड टाइम सिमेट्री डेफिनेटली 74 आएगा, एंड दैट शुड टेक आउट लॉट ऑफ शॉर्टिंग स्टॉप लॉसेस, एंड पोस्ट विच क्रूड कैन ड्रॉप. ठीक है, सो दो बार देखिएगा इस वीडियो को. क्रूड की बहुत ही फैंटास्टिक शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म एनालिसिस आज हमने सामने रखी है. नेचुरल गैस की बात करें तो जैसा मैंने लास्ट लाइव सेशन में एक्सप्लेन किया था कि कुछ खास मुझे यहाँ पे ट्रेडिंग एक्टिविटी कुछ यहाँ पे दिख नहीं रहा है. आई थिंक इट्स प्रीटी रेंज बाउंड, एंड देयर इज अ रिस्क in the NG market, and that is that probably we are winding up with the long view for future. Probably one move 389, 390, one move can come like this, but I think NG is getting distributed in a very smart manner with the ongoing Russia and Ukraine crisis. NG should have by now, NG should have been trading above this 390 level, which it has failed to do. And plus the seasonality is again turning against the NG market. So I think there is a headwind ahead for the NG market. I don't think it is going to cross the 390 level. Right now, there is a very good support at 320, 325, but I'm not advising to play on the long side. I think even if it gives some structure, maybe if it creates some structure, some triangle, and probably then we get some breakout, then probably in that case I will play for 390, or else just pass it on, let it spend some time, let it give some interesting structure, and probably then we will play for the long side. Overall, where we are in the NG market is something like this, that we are trading in this long channel. Okay, and last time we have huge cracking move, and this time if it comes at 390, it will again be damn interesting, because it would have made a head and shoulder in a downtrending channel, and such structures generally resolve very badly on the lower side. ठीक है, तो 100 बात की एक बात कि अभी कुछ खास ट्रेडिंग मुझे एक्टिविटीज में दिख नहीं रही है. 320, 325 बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स हैं, और ऊपर में 390 का विंडो खुला है. मैं फिलहाल इसे पास करना पसंद करूंगा. ओके, कॉपर की बात करते हैं तो कॉपर में एक डिक्लाइन हो रही है, विच इज वेरी मच एविडेंट, एंड आई थिंक कॉपर में इस समय अगेन दैट चॉपी थिंग इज हैपनिंग. सो कोई क्लियर कट इसमें ट्रेड एक डेवलप नहीं हो रहा है. 750 का एक अच्छा सपोर्ट है, एंड नो ट्रेड इन कॉपर. निकल बुलिश है, निकल ने एक नया हाई भी प्रिंट किया है, बट आई थिंक इसे अभी मेटल से थोड़ा दूर रहना ही मेरे ख्याल से इस वक्त बेहतर होगा. सो दैट्स ऑल ऑन द कमोडिटीज फ्रंट. एक बार क्विक चेक करते हैं इथेरियम एंड बीटीसी. सो बीटीसी टुडे in the cryptos, they are bouncing, so they took support at the earlier breakout breakout support level. So this was the breakout, this is the support. So technical moves हो रही हैं. 2635 का आपको एक बाइंग लेवल मैंने सजेस्ट किया था, ये अभी तक होल्ड कर रहा है. So I think it is okay, you can take a long here, put this as a stop loss, and probably it can go and test 3000, or at least this move. So this much move can happen, this much move I think it is plausible, I think it deserves this much. We are also back testing this breakdown channel breakout and retest over here. So I think it is a valid trade. I think this must be tried. Okay, and I think it's a good trade. ठीक है, risk reward technically सारी चीजें ठीक है. I think it's a good bet. I won't say it's a good trade, it's a good bet.
सो ये है इथेरियम पे व्यू एज ऑफ नाउ। बीटीसी की बात करूं तो 38,200 है। बीटीसी पे मुझे कुछ खास क्लैरिटी नहीं इस समय दिख रही है। स्ट्रक्चर सेम है लगभग, दैट बीटीसी हैड दिस एंड बट आई थिंक बीटीसी में समय देना चाहिए बिकॉज समथिंग इज नॉट good with BTC. Okay, this breakout should have gone further, and then a down move should have come up till this 39,000 level. But what has happened instead is the breakout was not quite high. It did not even test the 233 MA, and it cracked down pretty lower. So I think it's best to leave BTC and trade every crypto as per the respective charts for some time, for some days. Very soon we are going to have some solid cracking moves again. So after Feb, I think March onwards again we will have a lot of clarity. So I have covered your US market, the global markets, equity markets. I have covered Forex, I have covered commodities, I have covered the crypto markets. Okay, now let me go towards the Nifty and the Bank Nifty. So what a superb day yesterday. पहले मैं yesterday की बात करता हूँ क्योंकि कल रात को मैं लाइव सेशन नहीं ले पाया था. So yesterday, I mean day before yesterday से अगर बात करें तो consistently I have been saying that these are the shorting levels. Okay, so 17,450, then 17,390, 17,350, 17,325. सिंपल ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस जो है एक बेरिश कॉन्टेक्स्ट में फॉलो हो रहा है. एंड अगेन व्हाट अ बिग ड्रॉप, अगेन एक ह्यूज ड्रॉप आता है. 16,800 जो मैंने पहले बताया था आपको, इस वीक में एक टारगेट मैंने दिया था कि निफ्टी 17,400 से 16,800, ये एक मूव आना बहुत ही ज्यादा एकदम पॉसिबल है. और मंडे की शुरुआत, ट्यूसडे की शुरुआत जो एक नेगेटिव साइड से होगी. सो ये चीज हमें यहाँ पे देखने को मिला. एंड 16,800 मैसिव सपोर्ट है. 16,800, 16,900 मैंने कहा था इंट्राडे ब्रेक होगा. और 16,800 अगर सपोर्ट लेके बाउंस करता है तो वापस से अगेन दैट सेम ग्राइंड जो है ये रिपीट होगा. तो बहुत ही शानदार एक बेरिश मूव यहाँ पे कैच हुआ है. ग्रुप मेंबर्स को भी सबको इन्फॉर्म किया गया था थर्सडे से, फ्राइडे से, वेडनेसडे से, एंड बहुत ही जबरदस्त. उसके बाद यहाँ पे कल जो है हमने लॉन्ग कराया. ग्रुप मेंबर्स को पता है कि यहाँ पे हमने बैंक निफ्टी जो है इसको लॉन्ग कराया 16,900 के आसपास, 16,880 के आसपास. एंड बैंक निफ्टी वाज आल्सो ट्रेडिंग एट दैट रिस्पेक्टिव लेवल एंड वी गॉट अ वेरी नाइस जंप. एंड टुवर्ड्स द एंड आई सेड लेट अस एग्जिट, क्योंकि कुछ ठीक नहीं लग रहा है मुझे. ठीक है. एंड व्हाट हैपेंड, ठीक नहीं लग रहा है मुझे मतलब मेरी तबीयत नहीं, बाजार की तबीयत जो है नाजुक लग रही है. एंड आई थिंक दैट वाज अ वेरी गुड सस्पेक्ट बिकॉज टुडे इवन आफ्टर अ गैप अप मूव अगेन इट ड्रॉप टुवर्ड्स द एंड. नाउ फॉर टुडेज, अगर मैं कल रात को लाइव आया होता दोस्तों तो आज के लिए मैं 17,280 या 250 समवेयर ओवर हियर आई वुड हैव केप्ट द मॉब लेवल. Why? Because of this simple trend line resistance which has proven many times in the recent past. So ideally आज का दिन पूरा ही shorting side ही होता. Okay, but and the mob level should have been 17,250 sort of level. तो आज का जो डाउन मूव है बहुत लोग सरप्राइज हैं, बट आई एम नॉट एट ऑल सरप्राइज, क्योंकि ये चीजें होना बहुत ही नेचुरल सी बात है. नाउ कुछ चीजें जो हम अभी हमें डिस्कस करनी चाहिए, कुछ जो एक कॉन्टेक्स्ट जो डेवलप हो रहा है. ये जो ग्रीन ट्रेंड लाइन है विच हैज एक्टेड एज अ वेरी गुड सपोर्ट. इफ यू सी दिस ग्रीन लाइन is a okay, over here we broke below that line broke below that line and we dropped again. We went in and we spiked up again. There was a drop, so again there was a resistance. So this line is telling me that that this line in future will be my very very critical line. Similarly इस तरीके से जो ये resistance line है ये भी एक critical line है मेरे लिए. Now if you see both the line, if you join, there comes a level of 17,200, correct? And then you have these horizontal levels coming at 17,280. So going forward my most important level from a very short term perspective, now let me tell you that this might be a sort of a a triangle, you may call it a wedge, whatever it is. अगर आप इस 30-minute चार्ट को आप डेली में बनाएंगे तो आपको ऐसे कुछ एच शेप पैटर्न, डब्ल्यू शेप दिख सकता है. यानी जब बड़ा हो ये जब मूव हो जाएगा तो इट विल लुक लाइक डब्ल्यू. सो वी आर समवेयर हियर. Okay, now here two things can happen. Either we break this wedge, okay, and take down and flush out and wash out and make the bottom, or we again come down
at 16,929 or 16,000, let's say 920, take support at this newly recent sort of a support zone, 16,920 से 16,850 इस 70 पॉइंट के जोन में, somewhere here, and then bounce up like this. Okay, तो अब सिचुएशन ऐसी हो गई बिकॉज प्राइसेस आर कंप्रेसिंग. अब देखिए रेंज छोटा हो रहा है, ठीक है, और मल्टीपल सपोर्ट्स यहाँ पे बन चुके हैं. जनरली स्पीकिंग, एज पर माय स्टाइल ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, a price which is taking support multiple times is not a good price. Okay, it means that वो price वो level को break करना चाहता है. Okay, so I will be adopting a different approach, which is till my resistances are not cut, I'm not going to buy this market. Okay, it may look very lucrative, but I will not buy this market. And I have been advocating not to do this since so many months. पिछले 4 महीने से हमने इस सारी चीजों को कवर किया है एवरीडे बेसिस पे. नाउ यहाँ पे एक ही सिनेरियो में मैं इस मार्केट को बाय करना पसंद करूंगा, वो भी मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा. सो इन द शॉर्ट टर्म फॉर टुमारोज सेशन, अगर सिंपल सी बात मैं रखूं तो एक चीज का ध्यान दीजिए कि अगर मार्केट कल एक गैप डाउन की स्थिति में नीचे खुलता है, ठीक है, तो ये जोन को आप ध्यान देना, 16,920, 850. इंट्राडे 5 मिनट के चार्ट वगैरह को देखना. अगर मार्केट नीचे खुलता है, मार्केट नीचे जाता है, तो पहले इस जोन में ये आएगा. अगर हाई टाइम फ्रेम ट्रेडर्स अगर इंटरेस्टेड हैं, तो जैसे यहां से जो एक रैलीज आती हैं, जो टेक्निकल बाउंस बैक आते हैं, इफ द हाई टाइम फ्रेम ट्रेडर्स आर इंटरेस्टेड टू जनरेट वन मोर राउंड ऑफ अप मूव एटलीस्ट टिल 17,270, इफ नॉट हाइयर, एटलीस्ट टिल यहां तक, तो ये एक मूव आपको ऐसे यहाँ पे मिलेगा. Okay, so in this zone you should watch, and what will be a technical sign that some bullishness has come that will enable you to take a long trade? That is, number one, it should come in this region, it should then start to make a higher high, something like this, and जो VWAP होगा उसको ये कट करेगा. VWAP के ऊपर ही जाएगा, ये थोड़ा 10-15 मिनट एक्सेट्रा, it will sustain, and that will be a sign that probably we can take a long trade. ये एक assumption based trade होगा, ऐसे मैं एडवोकेट नहीं करता, बट यस द प्रोबेबिलिटी इज क्वाइट हाई. नाउ इफ यू टेक सच अ ट्रेड, देन बाय डिफॉल्ट ये आपका फुल एंड फाइनल आपका स्टॉप लॉस हो जाता है. ट्राई टू कीप couple of points lower, maybe 10, 20, 30 points lower in case of stop loss hunt, ठीक है. and then एक ही टारगेट होगा from this zone, the target will be 17,270. तो ये एक ट्रेड यहाँ पे इस तरीके से है, ठीक है. now mob level for tomorrow's session will be 17,270, which means that till we are below this level, market is sell on rise. So any move that comes, we should short. Target होगा ये वाला zone 16,920. मार्केट अगर कल कुछ मिरेकल होता है और इस 17,200 वगैरह के ऊपर खुलता है, याद रखिएगा ये जो पॉइंट है 17,200 वगैरह के ऊपर अगर खुलता है, ओपन होता है, that will be sign of strength. ऐसे केस में मार्केट पहले ये मॉब लेवल को टेस्ट करेगा, और अगर वो यहां से वीक होना शुरू होता है तो ही आप इस मार्केट को शॉर्ट करना, क्योंकि 17,200 के ऊपर की ओपनिंग अगर होती है, दैट वुड मीन दैट वी आर ओपनिंग अबव टुडेज हाई. सो अ प्रीवियस डे हाई ओपनिंग, gapping up above previous day high, gapping up above previous day high qualifies to be a trend day. Okay, but then we have this 17,270 as a overhead, but still जब तक ये जो ओपनिंग होगी गैप अप के ऊपर, उस गैप के नीचे नहीं जाता, तब तक आप शॉर्ट मत करना, ठीक है. तब तक उसे जो है शॉर्ट नहीं करना है, उसे ऑब्जर्व करना है. अगर मॉब लेवल के नीचे रहता है और उसके नीचे फिर ये ब्रेक करता है, देन तो 100% शॉर्ट है. एंड देन डायरेक्टली आपको ये 300-400 पॉइंट, नॉट ओनली दैट, इट विल कैपिचुलेट. okay, it will break all these levels and straight away come like this towards that final 16,400 and 500 zone, जहां पे फुल एंड फाइनल बॉटम बनेगा. सो आई थिंक मैंने इसको बहुत ज्यादा कुछ डिटेल में समझा दिया, तो कंफ्यूज नहीं होना है, लेवल्स के हिसाब से जो है काम करेंगे. ओके, वेरी क्विकली निफ्टी की एक बड़ी पर्सपेक्टिव थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, वेयर वी आर. सो एक सिंप्लीफाइड चार्ट अगर हम शेयर करें, लाइन चार्ट, सो एज यू कैन सी लास्ट टाइम यहाँ पे ही हमने वार्निंग दिया था दैट वी आर बैक टेस्टिंग दिस ब्रोकन लाइन एंड वी आर टेस्टिंग
डाउन ट्रेंडिंग स्ट्रक्चर, सो ऑब्वियस सी बात है कि बाजार जो है नीचे जाना चाहिए. सो इट वाज वेरी वेरी सिंपल. एक 10 स्टैंडर्ड का, या 10 तो बड़ा हो गया, एक 5th स्टैंडर्ड का बच्चा भी इसे जान सकता है. ओके, नाउ कुछ चीजें कॉन्टेक्स्ट पर्सपेक्टिव से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ. ये चार्ट्स बहुत ही मेस्ड अप आपको दिखाई देंगे. इट इज माय प्रोप्राइटरी चार्ट्स, तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, ये सिर्फ मैं ही समझ सकता हूँ. सो यू कैन इग्नोर और यू कैन ट्रोल और यू कैन मेक अ फन ऑफ इट, बट this is the chart worth lot of money. Now here, what is happening? What is happening here? Okay, multiple things are happening here. यहाँ पे बहुत सारे गेम हो रहे हैं. 2-3 गेम यहाँ पे रिटेल के लिए डिजाइन की जा रही हैं. अब या ये खुश होगा या ये दुखी होगा, ये बहुत जल्द इसमें पता चलने वाला है. मैंने आपको पहले भी बताया कि 10 मार्च के पहले आई डोंट सी एनी न्यू हाई एक्सेट्रा इन दिस मार्केट. इस जो भी होना है इसके बाद ही होना है. एंड इवन देयर इज अ गुड चांस दैट till 10th of April nothing will happen, which means that yes, there will be zigzag, but there will not be any new high at least before 10th of March. और ये चीज मैंने यहाँ नहीं बोली है, यहाँ नहीं बोली है, ये चीज हम यहाँ से डिस्कस कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने 65 डे साइकिल को जो है यहाँ पे धोखा दिया है. ठीक है, पुराने वीडियोस आप देखिए, आपको समझ में आएगा 65 डे क्या है, 125 क्या है, 180 क्या है. All these things I have explained in the earlier videos, live sessions, etc. Now, why I am highlighting this is, why I am highlighting right now is, this candle never makes a bottom. So this is not a final bottom. ये बात तो तय है. ठीक है. And we have this bottom, we have this bottom, we have this bottom. So अभी यहाँ पे हो चुके हैं 1, 2, 3. Structure wise, we are almost making either a falling wedge or we are making sort of a triangle with a triple bottom. Okay, now दो चीजें यहां से निकलेंगी. नंबर एक चीज बता देता हूं कि बैंक निफ्टी स्ट्रांग है निफ्टी के मुकाबले. बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट गिर सकता है, दैट इज फाइन, बट बैंक निफ्टी रिलेटिव आउट स्ट्रेंथ दिखाने वाला है. ओके, बैंक निफ्टी अभी मैं डिस्कस करूंगा. सो दिस 1 to 3 इज नॉट अ साइन ऑफ अ बॉटम. ये बात तो तय है दैट इट इज नॉट अ साइन ऑफ अ बॉटम फॉर नाउ. सो टू थिंग्स कैन हैपन because of this price compression, because of too much of zigzag and too much of the news flow, and every time it dips and it is being bought. So what is happening, you see कि यहाँ पे बुल्स को भी ये कन्विक्शन आ रहा है कि नहीं हर बार बाय करो ये ऊपर जाएगा, और बेयर्स को भी कन्विक्शन आ रहा है कि हर बार जो है शॉर्ट करो ये नीचे जाएगा. सो बोथ दिस पार्टीज दे आर एंजॉयिंग दिस पिंग पोंग थिंग हैपनिंग. नाउ वेरी सून दिस हैज टू गिव अवे. करेक्ट, वेरी सून दिस हैज टू गिव अवे. और हमें ये पता है कि ऐसे बॉटम नहीं बनता है. तो दो चीजें हो सकती हैं. नंबर वन, यू जनरेट अ मूव ऑन द हायर साइड. व्हाट विल हैपन ड्यू टू दिस, दैट द बुल्स व्हिच आर getting confident right now on every up move, they will start considering और they will start saying कि कभी कभी लगता है आप उन्हीं भगवान है. ठीक है, and that will be the seed of disaster for next time. So what will essentially happen is, if this behavior happens, that you just bounce off from here without making a conclusive bottom, what will happen is the bulls will say मैंने बोला था, and then they will become too much arrogant, or they will not arrogant, but they will become too much optimistic without realizing that there is going to be a problem in future. क्यों? क्योंकि देखो, जिस चीज का सलूशन आप इतना नजदीक आके निकाल सकते थे, अगर आपने उसको नहीं निकाला है तो मार्केट वो अपनी मेमोरी में स्टोर करता है और नेक्स्ट टाइम वो चीज होता है. यही चीज मैंने यहाँ भी कहा था. यहाँ पे ओके, व्हेन वी ब्रोक आउट ऑफ दिस, यहाँ पे मैंने कहा था कि ये जो बॉटम है ये बहुत भारी पड़ेगा ट्रेडर्स को अगले साइकिल में, क्योंकि एक्चुअल बॉटम यहाँ बनना चाहिए था उस समय, एंड मार्केट समहाउ bounced off from this and staged such a wonderful rally beyond expectation. मुझे तो honestly नहीं लगा था कि 17,200 वगैरह के ऊपर जाएगा, बट मार्केट तो पूरी तरीके से 18,200 वगैरह भी चला गया. और ये पूरे रैली में मैं यही बात बोलता था कि मार्केट is going to take its revenge in a very brutal manner, and then what started was a huge crash. Okay, huge crash. इसको मैं crash कहूंगा क्योंकि the way it happened, that was very very scary. And what followed next is a proper trapping of the retail traders on the long side. There are so many people who are stuck on the long side क्योंकि unfortunately सारे एनालिस्ट और सारे यूट्यूबर्स ने बाजार में लोगों से बाइंग करवाई है, बेचना नहीं सिखाया है.
हम वही चीज कर रहे हैं, हम बेचना सिखाते हैं। बॉस खरीदते रहोगे तो कमाओगे कैसे, बेचोगे तभी तो कमाओगे, ठीक है। सो लर्न टू प्ले ऑन बोथ साइड ऑफ द टेबल। सो यहाँ पे 100 बात की एक बात कि ये चीज इस तरीके से यहाँ पे रिजॉल्व होगा। अगेन देयर विल बी अ चैनल रेजिस्टेंस एंड ऑल दीज थिंग्स एंड प्रॉब्ली market will come back in a very brutal manner to take out the final revenge and then bottom out somewhere in April. If this scenario unfolds, then somewhere in April, that is why मैंने जो है 10 अप्रैल जो है ये कहा, and probably till like 10th of March sort of thing we will do all these zigzag etc. and probably अगर हम दूसरा सिनेरियो करते हैं, यानी instead of going up, the best thing that can happen for this market is a complete capitulation towards 16,400, 16,200 etc. in panic and then stage a counter back rally. ये चीज इस बाजार के लिए, ट्रस्ट में, ये पेनफुल होगा बट यही इस बाजार का इलाज है। ओके, दिस विल क्लीन आउट ऑल द फ्रॉथ इन द सिस्टम व्हिच हैज बीन बिल्डिंग सिंस लास्ट 2 years। ओके, दर्द होगा बट सुकून मिलेगा, यहाँ पे सुकून देगा बट दर्द वापस बहुत बड़ा बन के आएगा, ठीक है। सो ये कुछ कॉन्टेक्चुअल बातें जो मैं बता रहा हूँ, ये आज और कल नहीं होगा, आने वाले कुछ दिनों में होगा, बट एक कॉन्टेक्स्ट को समझ के चलना बाजार में अत्यंत जरूरी है, क्योंकि जब हनीमून चल रहा होता है तो सब बढ़िया लगता है, असली मजा उसके बाद है, या मजा या सजा जो भी है, ठीक है। सो ये कुछ बातें थी निफ्टी के फ्रंट पे। And why I showed this chart is because clearly we are in this vertical time zone, and clearly if we don't bottom here, if we don't break this and bottom by 10th of March like this, अगर हम ये करते हैं तो बहुत अच्छा होगा, and we will get a huge counter back rally for the next March to April cycle. Okay, so I wish this market crashes down all the way till 16,000 or at least till 16,400, test this yellow 233 EMA and then stage a very nice rally. As you can see, it will also probably develop some sort of harmonic structure. So ये बहुत ही बढ़िया होगा दोस्तों इस बाजार के लिए, अगर ये होता है अभी तो वेरी गुड, एक्सेलेंट। बट अगर ये नहीं होता है और हम डायरेक्टली यहाँ से बाउंस करते हैं इस सपोर्ट से, यहाँ से अगर हम अप्रैल की जर्नी हम ऐसे शुरू करते हैं 18,000 18,100 के लिए, ओके, विच इज अगेन द मैसिव रेजिस्टेंस जोन, दिस इज अगेन अ वेरी मैसिव डिमांड जोन। सो ठीक है, डिमांड है, यहाँ पे आप देख सकते हो डिमांड है, बट ये जो रीसेंट ट्रिपल बॉटम है ये एक दोगलापन है, ये सपोर्ट के आड़ में ये एक दोगलापन है क्लियरली। Okay, so as you can see, this market has become complicated, unlike the previous instances where it just used to move up. We are in a complex market और ये बहुत ही अमेजिंग मार्केट है। अगर आप सही में, अगर आप ट्रेडर हो, आप सही में अगर आपको एनालिसिस करना है तो ये बेस्ट मार्केट है, ठीक है। ये मार्केट में, ऐसे मार्केट में हर नौसिखिया जो है यूट्यूब पे आके जो है एक्सप्लेन कर देता है, बट व्हेन मार्केट्स बिकम कॉम्प्लिकेटेड, दैट इज द टाइम व्हेन यू आर बीइंग टेस्टेड ऑन ऑल द फ्रंट्स। चलिए एक बार चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ कि वहां पे क्या सिचुएशन है और फिर हम कुछ स्टॉक्स लेंगे। सो बैंक निफ्टी, व्हाई आई सेड दैट बैंक निफ्टी इज रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग, उसको समझने के लिए एक बार हम वेरी क्विकली सिंपल वीकली चार्ट देखते हैं। सो ओवर हियर वी आर मेकिंग अ इनसाइड बार राइट नाउ which is quite good. So far we have been defending this. This can be called as some sort of a channel etc. Overall ये आप इसको triangle भी बोल सकते हो, जो बोलना है। Overall we are in a pretty range bound scenario. So this bank nifty, if I explain you from a market geometry perspective, so this bank nifty right now has made a very strong support at these levels. Now look at the difference. Even bank nifty has made 1 2 3, okay, but look at the difference. They are not identical supports, okay. Whenever there are identical supports, they are doglapan, which will be taken out in future. Take for example this one, very identical support, same support, correct। यहां से बाजार यहाँ गया, बट हुआ क्या, वो आएगा अपना बदला लेने के लिए, एंड इट केम, ठीक है, एंड इट ब्रोक एंड अगेन इट रिवर्स्ड। इसी चीज को हम स्विंग फेल्ड पैटर्न कहते हैं। और ये जो कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, अगर आपको यहीं पे ये चीज समझ में आ गई थी कि फ्यूचर में आएगा, तो जब ये डाउन ट्रेंड शुरू होता है, यू नो दैट सम अनफिनिश्ड बिजनेस व्हिच वर देयर माइट कम। यू डोंट नो दैट एग्जैक्टली यहाँ तक आएगा, बट आपको पता है कि यहाँ तक की स्कोप है।
और आप उसको धीरे 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 प्ले करते जाते हो करते जाते हो करते जाते हो, एंड देन दिस इज हाउ यू प्ले द ट्रेंड. Okay, so price action doesn't mean just reading the candles. Okay, so यहाँ पे bank nifty, if you look at this chart, we have a credible bottom in the bank nifty. So what I suggest is bank nifty is trading in this channel, अगर आपको उसे channel करना है, या फिर probably in this triangle, whatever you want to call it. I am focused more on this falling trend line because ये recent है, इसके पहले का past है, मुझे recent में interest है. I would say that Bank Nifty should drop once towards this 36,600, 500, etc. And अगर यहाँ से Bank Nifty में एक bounce आता है, I would definitely buy Bank Nifty over Nifty. And this bounce in Bank Nifty should be quite a good bounce, at least till 3900 or maybe somewhere near 39,700 or 40,000. 40 तो ज़्यादा हो जाएगा, but I think somewhere near this. Okay, this much. यानी ये जो move था, ये मूव यहाँ पे रिपीट होने की चांसेस बहुत ज्यादा है. ओके, सो इसे कैसे ट्रेड हम करेंगे, सी कल के लिए तो मैं बता दूंगा, बट एक कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग ये होनी चाहिए कि ये चीज होने की चांसेस है. नाउ एट द सेम टाइम यहाँ पे हिडन शोल्डर भी है, जो कि इस चीज को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना देता है. अब क्योंकि ट्रिपल बॉटम है, हेड एंड शोल्डर है, तो मोस्ट लाइकली क्या होगा, ये फ्लश करेगा. जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं जो प्राइस एक्शन जो सीख चुके हैं, जो ग्रुप में है, आपको पता है कि फ्लश क्या होता है. सो द मोमेंट यू सी दिस फ्लशिंग एक्टिविटी, that is the time to take a big trade long side on bank nifty with some stop loss and ride for this move where we will see some major resistance coming. तो contextual understanding, बड़ी पिक्चर को ध्यान में रखो. छोटी पिक्चर कैसे ट्रेड करना है ये तो बहुत ही सिंपल है. अभी मैं कल के लेवल्स जो है हम शेयर कर देते हैं. Now see, in the extreme short term, which means next couple of days, we are respecting this rising trend line over here, okay, and this resistance over here. Now overall I think बैंक निफ्टी जो immediately drop करना चाहिए 37,000 के आसपास bare minimum, and if you take support here, if you defend this level, come down and start moving higher, go long. यहाँ पे long करिए again. Okay, this will be your stop loss, and then we should expect at least 38,200. ठीक है, लेवल्स मैं दे देता हूँ, बट कॉन्टेक्स्ट आपको मैं इस तरीके से समझा रहा था. सो लेवल्स क्या होंगे बैंक निफ्टी पे, this is bank nifty spot. So I think for tomorrow's session bank nifty पे एक ही लेवल मुझे इंटरेस्ट है, वो है आज का हाई, which is 37,755. So the make or break level for tomorrow's session will be 37,750. ओके, ये इंपॉर्टेंट लेवल है. इसके नीचे जब तक हम हैं, हमें जो है थोड़ा बेरिश ही रहना चाहिए और शॉर्ट ट्रेड जो है हमें ट्राई करना चाहिए. डाउन साइड में पहला टारगेट होगा 37,200 एंड सेकेंड टारगेट में रखूंगा 36,600. याद रखिए कि 36,600 से लेके 36,400 बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है लॉन्ग टर्म पे. सो यहाँ से बाउंस और एक अच्छी बाउंस आना बहुत ही नेचुरल सी बात है. ठीक है, सो इस चीज का फायदा उठाइए. 37,750 इसके ऊपर आई थिंक बैंक निफ्टी इज डेफिनेटली गोइंग टू रॉकेट till first target 38,500 and 38,900, जहां पे अगेन मेजर रेजिस्टेंस आ जाता है. ठीक है, सो 1000 पॉइंट्स ऊपर 1000 पॉइंट्स नीचे कुछ इस तरीके से बैंक निफ्टी प्लेस्ड है. कॉन्टेक्स्ट में आपको बता चुका हूं, अगर इस जोन में आता है तो बाइंग करनी चाहिए, बट हालात को देख के हो सकता है एक दिन में बहुत सारी चीजें बदल सकती हैं. सो डू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ओवरऑल these things of your surroundings, and play with stop loss as per your risk limit. So that's all I have on bank nifty for today's session. So in the stock segment, I have only few stocks right now to have a look, क्योंकि मैंने ग्रुप में जो मैसेज किया था तो कुछ मुझे मैसेजेस आए. तो I have this couple of only 4 stocks I could see: HUL, UPL, Tata Power and Scots. तो मैं इन स्टॉक्स को एक बार चेक कर लेता हूँ. सो हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये स्टॉक कम से कम मैंने 50,000 बार समझाया होगा कि ये स्टॉक इन्वेस्टर स्टॉक है. 2300-2200 पे से बाय करिए एंड होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म. इसमें शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं किया जा सकता. सो दैट इज वन स्टॉक. UPL अगेन
थोड़े दिन पहले ही मैंने सजेस्ट किया था कि कैसे इसे डील करना है, और यहाँ पे इसने 200 डे में ब्रेक कर दिया है। मैंने कहा था कि अगर आप लॉन्ग हैं तो यहाँ पे इसको 678 के आसपास, 670 यहाँ पे स्टॉप लॉस, तो ये जस्ट इट्स वेरी क्लोज टू दैट। सो यहाँ पे स्टॉप लॉस प्लीज लगाइए, डोंट मेस विद द स्टॉप लॉसेस। मैंने काफी सारे स्टॉक्स आपके सामने शेयर किए जहां पे दे हैव गुड राउंडिंग बॉटम स्ट्रक्चर, बट ये इवेंचुअली अपने 200 डीएमए को ब्रेक करके नीचे बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्रैक कर रहे हैं। यूपीएल हालांकि ये एक बढ़िया स्टॉक है और इसमें अभी भी अपसाइड की काफी अच्छी गुंजाइश है, बट अभी के लिए इसे निकल जाना। अगर 670 ब्रेक होता है तो प्लीज इसको एग्जिट करेंगे, गिव इट सम टाइम। जैसा मैंने मार्केट को बताया कि मार्केट अभी भी एटलीस्ट 10 मार्च तक कुछ खास नहीं कर सकता है, और हो सकता है शायद 10 अप्रैल तक कुछ ना करे। ये जो टाइम है, इस टाइम में आपको जो है अपने हुनर को दिखाना है, बिकॉज इस टाइम में अगर आप सब स्टॉक्स में ऊपर ऊपर में अगर आप फंसे रहेंगे तो क्या होगा कि जब एक्चुअल जब मूव आएगा, सो आपको मिलेगा कुछ नहीं। ओके, एक्चुअल टाइम में क्या होगा, आप जो है कॉस्ट और में भी एट कॉस्ट या थोड़ा बहुत प्रॉफिट पे निकल जाओगे, तो क्या फायदा हुआ इतना पूरा 4-5 महीना वेट करने का। अंडरस्टैंडिंग? सो इसलिए मैं कह रहा हूँ डिसिप्लिन में रहो। जो डिसिप्लिन में रहेगा तो पिछले 4 से 5 महीने का जो मार्केट जो एक ट्रैक किया है, इसका एक ही महीने में आपको बेनिफिट मिल जाएगा। ओके, बट टू प्रॉफिट फ्रॉम दैट पोटेंशियल मूव यू नीड टू बी वेरी रेडी। ओके, आपका कैपिटल और आपका माइंड सेट रेडी होना चाहिए। अगर आप पहले से फंसे हैं तो फिर आप कैसे काम करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेरी थी वो थी टाटा पावर। सो आई थिंक टाटा पावर में भी सेम सिचुएशन आई हैव एक्सप्लेन्ड दैट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस स्टॉक at all in these levels. I will be only interested either at the breakout or I will be interested at 200. तो अगर आप इसमें लॉन्ग वॉन्ग में हैं तो आप कुछ स्टॉप लॉस लगाइए या तो फिर आप निकल जाइए, और जब 200 पे आए तो हम इसमें दिलचस्पी दिखाएंगे, या जब ब्रेकआउट करे। फिलहाल डाउन ट्रेंड है तो ऑब्वियसली बात है कि 200 पे आने की चांसेस ज्यादा है। ऊपर में 240 एक क्रिटिकल रेजिस्टेंस बन चुका है। ठीक है, एक एक स्टॉक था एस्कॉर्ट्स, and let me see this stock and then I will okay, so escorts is trading very very tightly। ये स्टॉक जो है आई थिंक काफी इंटरेस्टिंग काउंटर इस समय बन रहा है, क्योंकि रेंज बहुत ज्यादा नैरो हो चुकी है और पूरी तरीके से फ्लैटिश स्ट्रक्चर है। जनरली ऐसा स्टॉक एक ह्यूज ब्रेकआउट देता है। नाउ गिवन द मार्केट दैट वी आर इन, इस मार्केट में थोड़ा सा एक डाउट आ जाता है, बट आई थिंक इट इज वेरी एक्सेलेंट। तो मैं समझता हूँ कि अगर आपने इसे एक्यूमुलेट किया है यहाँ पे, take a chance with this, there is no harm because our job is to buy the strength and sell the weakness। तो ये अगर एक स्ट्रेंथ दिखा रहा है तो हमारा काम है इसे इज्जत देना। एक थोड़ा सा हेड एंड शोल्डर मुझे दिख रहा है, बट मैं इसे जो है इतना ज्यादा वेटेज नहीं दूंगा। ठीक है, सो कैसे ट्रेड करेंगे, देखिए अगर आप इसमें लॉन्ग है तो एक ही चीज है कि 1800 का स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। ओके, स्टॉप लॉस अगर हिट होता है तो इसको एग्जिट कर देना ही वाजिब होगा, क्योंकि एज आई सेड कि अगर स्ट्रेंथ कमजोरी में बदल गई तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। आई थिंक 1800 इज अ गुड सपोर्ट, इसको आप होल्ड कर सकते हो। अगर ये ब्रेकआउट दे देगा, जिसकी चांसेस मैं जानता हूँ बहुत ज्यादा हाई है, ओनली इन केस व्हेन निफ्टी क्रैक्स वेरी बैडली, आई थिंक ये फ्लॉप होगा, नहीं तो आई थिंक इट हैज अ गुड चांस। एंड वंस इट ब्रेक्स आउट, आई थिंक दिस स्टॉक इज गोइंग ऑल द वे टिल 2000। ठीक है, जिसमें बहुत अच्छी मूव देखने को मिलेगी। ओके, सो ये कुछ 4 स्टॉक्स थे दोस्तों जिनको मैंने कवर करने की कोशिश की है। एज आई सेड टुमारो विल बी अगेन नो लाइव सेशन। लाइव सेशन अब जो है या तो मैं शायद वीकेंड पे करूं, या मे बी फिर हम जो है फर्स्ट को शिवरात्रि है तो मे बी सेकेंड से हम करेंगे। तो एवरी डे आई विल ट्राई टू पुट अप दिस रिकॉर्डिंग्स। तो कमेंट सेक्शन में आप बताइए कैसा लगा रिकॉर्डिंग, क्या अच्छा था क्या बुरा था। एंड शेयर सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें। इंस्टाग्राम पे जुड़ जाइए, और आप जो स्टॉक क्वेरीज देखना चाहते हैं उसको कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, तो मैं कल के वीडियो में सारी स्टॉक क्वेरीज को मैं कवर करूंगा। ठीक है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नेक्स्ट ट्रेनिंग इज कमिंग अप ऑन March 5th and 6th which is the next weekend। so if you are interested आप व्हाट्सएप करके ज्वाइन कर सकते हैं। once you join, you will be added in our student telegram group for a period of 3 months। thanks for watching, take care, wish you all the best। जय माता दी।